Welcome everyone. Today we are going to discuss architectural fusion. It will be a discussion-based workshop. Everybody is welcome कि आप किसी भी time unmute करके you can comment, you can ask me questions, and you can contribute to the discussion. And yeah, just don't unmute if you're not adding towards the conversation. And so just a bit of housekeeping again, जिन लोगों ने बाद में join किया है, so please rename yourself. Sania, I can see you haven't renamed. Sahil, welcome to the webinar. Please rename yourself as your first name and then in bracket your year of study. That is important क्योंकि हम एक exercise करेंगे जिसके लिए we need to know कि किस year of study से आप belong करते हैं. अगर आप यूनिवर्सिटी के students नहीं हैं, तो you can just based on your understanding towards the topic, which is architectural fusion, bridging Asia and Ireland. इस की जितनी भी आपकी knowledge है, you can just rank yourself first year, second year, third year, or whatever. इसके अलावा we have polls. You might be seeing on your screen. सिर्फ अब तक one of the participants has voted, so please do the polls. It is also important क्योंकि at the end we'll do another poll जिसके basis पे आपका certificate issue होगा to attend this webinar. So जो लोग ये दोनों polls पे vote करेंगे, they will only get the certificate. और सिमिलर किस्म का पोल हम एंड में लॉन्च करेंगे जिसमें आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी वगैरह जो है देना होगा. So we'll just wait, I think 2 more minutes, and then we'll like formally begin our introduction, the discussion. Okay, so before we move our discussion towards the buildings and architecture fusion, let's begin our discussion with the climate context and why it's important कि हमारी जो buildings हैं, they need to respond to certain atmospheres globally. क्योंकि we are in all of our discussion, we will be comparing Ireland, जहाँ पे सब मैं हूँ, and versus Asian perspective or फिर maybe Pakistani perspective जहाँ पे सब आप लोग हैं. So in Ireland, of course, it's cold. The ice in my background is not reflecting Ireland, but it's really cold. And versus that, in Pakistan, it's really hot. So हमारी जो buildings हैं, traditionally, historically, वो हम उसी तरीके से बनाते हैं so that they respond to a certain climate. And that's very basic. We all know that. Why are we discussing it then? ये तो हम सबको पता है. We are discussing this because globally, हमारा जो temperature है, be that in Ireland or be that in Pakistan, that's changing. Or like it's infecting, it's not only changing, we know that it's becoming more warm. ठीक है? So in Pakistan, when it becomes more warm, we call it a heat wave. In Ireland, यहाँ पे जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो it's just more hot and more warm. It is still a heat wave, and we'll discuss कि किस temperature पे यहाँ पे panic situation हो जाती है. And that's really interesting for you, and maybe I'll ask you कि यहाँ पे कितने temperature पे panic होता है, लेकिन that's really different. Yeah, so this little ये जो आप अपनी स्क्रीन पे राइट पे देख रहे हैं, that is the temperature record since जब से दुनिया ने temperature record start करना शुरू किया था. And we see that it's been changing in a certain way. कभी कम, कभी ज़्यादा. Yeah. Sorry. लेकिन after a certain time, after a certain year, which is like, did you notice now after 1950s जब से हमारे पास हमारी industries ने move करना शुरू किया, हमारे पास fossil fuels आ गए, जब से especially population बढ़ना शुरू हुई, this temperature is only increasing. बीच में जो एक green line आप देख रहे हैं, तो that's 0 degree. यानी कि जो पहले हम temperature का change देख रहे थे, that was sometimes कम, कभी ज़्यादा, कभी ऊपर, कभी नीचे. But since 1950s, it's always been increasing, and it's been increasing globally. अब buildings हम
क्यों बनाते हैं? Can somebody from audience just give me one sentence reply? What is the purpose of buildings? Uzair? Or can anyone? आप लोगों को बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि because the exercise we are going to do, you all will have to participate in that. So don't think कि बिना बात करने के we would be able to finish this workshop or get a certificate. Yeah, chat is okay for now. Like in the exercise, you will have to speak up. Yeah, to accommodate more people, but I would say from it's not just the purpose of the building to accommodate more people to accommodate them comfortably. जब तक बिल्डिंग का जो फंक्शन है दैट इज टू कि जो जो उसमें लोग रह रहे हैं दैट आर those people are comfortable with respect to outdoor environment. For example, इस वक्त आयरलैंड में that's about 9 Celsius outside, and अगर मेरे घर के अंदर भी 9 Celsius होगा so the building is not serving its purpose. Similarly, अगर पाकिस्तान में इस वक्त like कभी भी 42 है and if it's the same temperature inside, जो कि well Pakistan में most of the situation में about more or less same ही होता है, it means that the building is not serving the purpose. But like it's not 42 outside in Pakistan and not like versus inside. It's always much lesser. क्योंकि पाकिस्तान में जो बिल्डिंग है उसका पर्पस है कि टू कूल डाउन टू गिव यू अ शेल्टर फ्रॉम द सन वर्सेस जो आयरलैंड में एक बिल्डिंग है उसका पर्पस है टू लाइक प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द कोल्ड. बट मूविंग ऑन, सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बिल्डिंग का पर्पस क्या होता है. एंड लाइक बिकॉज नाउ टेम्परेचर इज चेंजिंग ओवर द ईयर्स, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनका पर्पस भी अपडेट हो रहा है एंड वी नीड टू accommodate the change. It is also important because we spend more than 90% of our time indoors, and that's a lot of our time. हम अपनी पूरी जिंदगी में like सिर्फ 10% about time होता है जो कि हम घर से सॉरी आउटडोर्स गुजारते हैं, क्योंकि हम घर से निकलते हैं तो थोड़े से रास्ते के बाद हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस से निकल के हम मस्जिद, मदरसा एंड आवर अदर एक्टिविटीज. अगर हम किसी स्कूल जा रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल जा रहे हैं, वॉट एवर वेयर एवर वी स्पेंड टाइम इंडोर्स and we spend time in a building. So not just our homes, but all of the buildings have to meet the needs. The terminology that I'm using that will be part of the exercise, जो हमारी building की needs हैं, that have to be fulfilled and those have to be completed. So when the temperature is changing now with respect to climate change, our buildings need to be healthy. And जब तक हमारी buildings अपना purpose serve नहीं कर रही हैं, we won't be healthy anymore. Architecture is important from accommodating or even just from accommodating us comfortably. It has been, of course, part of our identities. And like, if you look at these beautiful, this is just a very basic example, जो हमारी religious buildings हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि those are the buildings जिसमें हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके प्यार मोहब्बत डाल के टाइम लगा के हम उन्हें डिजाइन करते हैं, हम उन्हें बनाते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ अवर आइडेंटिटी. अगर मैं इस वक्त आपको मक्का टावर दिखा के सिर्फ ये बताती कि दिस इज अ टावर, लेट मी नो वेयर दिस प्लेस वेयर दिस टावर और बिल्डिंग बिलोंग्स फ्रॉम, यू वुड नो इट्स अ मक्का टावर. अगर मैं आपको शो, फॉर एग्जांपल आई लिव इन गॉलवे, देयर इज अ चर्च व्हिच इज वेरी फेमस. तो हम बहुत टाइम एंड एफर्ट लगा के उन बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ अवर आइडेंटिटी एज वेल. And they have been designed कि वो वहाँ के जो भी जगह है उसके एटमॉस्फेयर को रिस्पॉन्ड कर सके. Moving on to thermal comfort. So हमारा जो thermal comfort is like it is. In the next slide, I'll show you how it is a scientific thing, but then of course it's also a perspective thing as well. कि even in one room, दो लोगों को they can be feeling cool versus warm. अब हम तो दो लोगों की क्या बात कर रहे हैं, इवन हमारे अपने दो जो लेफ्ट एंड राइट पाँव होते हैं, जो फीट हैं, they are not even aligned. Like they are also confused कि हमें सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है. Thermal comfort is, yes, we can decide it scientifically, but then no again because it's
perception, and there's so many different factors. अब हमने building तो बना दी. Maybe from my perspective as a home designer or an energy consultant, this is a perfect home. But there could be people जिनके लिए वो home जो है उनसे similar condition में comfortable now. Now, this is a psychometric chart. I know we're not going to use this and not going to discuss this. It's super, super complex and it's super complex for experts as well. But this is just to give an example. कि the thermal comfort है, that is not just the left foot or the right foot. It's much more complex building physics involved in it. So this is a psychometric chart. Very simply, very briefly, it is a chart which shows relationship between building temperature versus humidity. Or इसके basis पे we decide कि जो zone say, for example, there's a zone in the between, which is the screen spot. This is the sweet spot. We want to be in the screen sweet spot all the time, लेकिन it's not possible. गर्मियों में हम अलग feel करते हैं इसी घर के अंदर, and सर्दियों में feel different. And what factors get to impact those? हमारी air speed. For example, पाकिस्तान में हम पंखे चलाते हैं, so it makes a difference in the temperature. In Ireland, we don't have fans or air conditioners. There's not even concept of that because we don't need air speed to accommodate our temperature. Or our thermal comfort, I would say here. Humidity. So humidity is, for example, it's a very bad situation in Ireland. It can lead to much more complex problems such as mold and all. Like if you have like a very bad humidity in your home, that can cause breathing problems. And well, my sensor is telling very bad breathing, which is a very bad example of it. But for example, it's showing me it's 79% humidity at the minute in my room, which is super, super, super uncomfortable and super unhealthy. Now I have this sensor on my desk, where I work most of my time. Because maybe I'm conscious about it and this is my work, I do it. लेकिन like of course normal लोगों के सामने उनकी desk पे humidity meter नहीं होता, because they don't know like not everybody understand the importance of it. Now I know it's 80%. So above 60%, it's unhealthy, it's uncomfortable, and it should not be above 60%. So whenever I see it's 80%, I just open my door to balance out the humidity, or maybe I will turn on the dehumidifier. So this sensor helps me a lot. And like the temperature says it's 18 degree outside, inside my building, whereas it's 9 degree outside. So 9 versus 18, and 18 is quite comfortable for me. So this is like 18 is after running on the heating. I know हम Pakistan में 18 पे जब AC चलाते हैं, that's comfortable for us. Like in Ireland, it's just normally 18 and it's comfortable for me. Clothing. So you can see I have a sweater on because even in the 18 degree, it's not comfortable for me to sit without a jacket or sweater. So मेरे पास दो choices हैं, या तो मैं energy और बिजली और पैसे खर्च करके या तो heating on करूँ, या तो simply मैं एक sweater पहनी हूँ. तो sweater पहनना है सस्ता, so I just wear the sweater. So that helps to my comfort indoor. Then metabolic rate. So for example, हम कुछ खाते हैं या फिर हम कुछ hot drink पीते हैं, so our metabolic rate is like it's an activity. So our body feels a bit warmer. So radiant temperature is the temperature. So in a home, in a building, it's not just the radiator or heater जो कि हमें गर्म feel कराने में help करता है, but there are internal gains in the building as well. For example, अगर मैं सांस ले रही हूँ तो उससे humidity produce हो रही है और उससे temperature increase हो रहा है. For example, इसी कमरे में अगर हम 2 लोग हैं तो it's okay, but इसी कमरे में अगर हम एक stand में 15 लोगों को बिठा दें तो it becomes much more warmer. So these are the things that add to the comfort perspective when people are inside, and we need to keep that in mind. ये तो broadly 6-7 factors हो गए जो कि normally हमें comfortable कराते. Okay, these are important, and these are important in any environment, be that Ireland versus Asia. So that's why it's important कि हम
Sorry. इन फैक्टर्स को हमें हमेशा नजर में रखना होता है जब जहाँ की भी हम बिल्डिंग डिजाइन करें. And how do these factors impact these of like in terms of health? For example, मैंने humidity versus mold का example दिया. That's become like mold होगा and then mold से impact होगा. That's bit like two-step thing. लेकिन directly if there's more humidity, it impacts on mental health, physical health, productivity. जितना ज़्यादा suffocated मेरा indoor environment होगा उतनी ज़्यादा मेरी productivity के ऊपर फर्क पड़ेगा. लेकिन if I have a like if my sensor tells me it's 18 degree and it's 60% humidity, which never happens for me, maybe it's more productive, not maybe, but actually it's more productive environment for me. Comfort and then well-being, and then जितना मैं ज़्यादा productive होंगी, and then it impacts on the mental health and then my performance. मैं किस तरीके से काम and so on. Moving on. So the need for globally हमने जैसे discuss किया कि the temperature is increasing everywhere. Ireland में भी temperature बढ़ रहा है, and then Asia में भी, पाकिस्तान में भी temperature बढ़ रहा है. लेकिन when I say कि Ireland में temperature बढ़ रहा है, yes, Lukman, you can ask your question. It's different क्योंकि यहाँ पे temperature बढ़ने का मतलब है कि normally अगर इस महीने में, for example, in October बाहर normally 8 degree होता तो आज 9 degree है, which is a temperature change, but like 8 से 9 होना, it's not life and death problem for me. Like when I say temperature increase in Pakistan, it's going from even if it goes from 42 to 43, yes, it becomes a problem of life and death. And especially because our buildings are not designed. Well, we'll come to that, and you'll decide if our buildings are designed to do that or not. So globally, एक research हुई है कि जितनी हमें heating चाहिए थी couple of years back, that's reducing, और हमें heating से ज़्यादा cooling की ज़रूरत है. So in Ireland, air conditioners are not a common thing, but now like साल में 2 हफ्ते या फिर 1 हफ्ता कोई ऐसा आता है when you feel really hot inside your building, because यहाँ की जो buildings हैं, remember, as I said, they're designed to keep me warm. तो अगर जून या जुलाई में जब वो हफ्ता आता है, it's crazy. You just can't live inside, and then you think of buying an air conditioner. But economically, it doesn't make sense कि आप एक हफ्ते की use के लिए you buy the air conditioner, and then even running an air conditioner is expensive in Ireland. So we just don't buy it. We just go to maybe our university because there is free cooling there, and we spend most of time there. Yeah. So, like I said, it becomes just more unbearable in the inside. So I have a quiz. I have a question. So even for the quizzes and for the activity, we will have a winning team, and they will get a winning certificate. So please participate in the quizzes and also in the activity. So my question is, what would be Ireland's recorded high temperature? And I would not accept the replies in the chat. You have to unmute yourself and tell me the answer to the question कि Ireland का recorded high temperature क्या होगा? Najibin, at least you can participate with your students. What would be the recorded highest temperature of Ireland? Meanwhile, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, please rename yourself and अपने नाम के आगे ब्रैकेट में अपना year of study डाल दें. After this couple of slides, we are going to do an exercise, and I would appreciate कि सारे लोग उसमें participate करें, because it will be a competition based. It's a game actually, but we will do the competition, and जो winning team होगी, they will get the winning award as well and the winning certificate. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I think it would be 11
or 9, in मैंने middle of 9 and 11. मैंने what's your name? I'm Minahil Fatma. Okay. मैंने मेरा सवाल क्या पूछा है? Hi, ma'am. एक Uzair, can you wait a second? Let me work out with Minahil. Minahil, what's my question? Missed your question was कि कितना हमारे पास टेम्परेचर है वो हो सकता है आइलैंड का जो रिकॉर्डेड हुआ है. My question is कि आयरलैंड में इस वक्त किसी भी महीने में किसी भी साल में what would have been the recorded highest temperature? For example, पाकिस्तान में मतलब पीक कितना हाई हो सकता है या पर गया होगा अभी तक हिस्टोरिकली? I think it would be 11 in Ireland. No, it's no because 11 is Ma'am, very. may I? Yeah, sure, Uzair. Ma'am, it's I guess 33, 33 Celsius. Did It you is go? 93. Did you No, Google it? ma'am, it's 93 written on the screen. And 93 Fahrenheit in Celsius would be around 33 Celsius, I guess. Okay. Yeah. So in Ireland in 2022, it was 33 degree, which is like recorded high, or that was the time when people were going crazy and they were like heat wave and like, they were like, they were really panicking. Panic का मतलब वो लोग ऐसे परेशान हो रहे थे कि जैसे यहाँ पे कयामत आ रही. And like just imagine कि Pakistan में outdoor temperature 33 हो. How would we behave? Like, what would be your thoughts about it? Any comments on that? अगर पाकिस्तान में let me check what's temperature in Pakistan now. It's 37 in Pakistan now. And like, how would you define descriptively case of Pakistan में temperature? How do you define? Like, not in terms of numbers, but in terms of how do you feel about outside temperature? Any comments? Minahil? It's very confusing at this moment because in the afternoon it's more hot. It gets sweaty. It gets humidity is high, and at night it gets very cold. So it's very confusing to me, to be honest. Okay, are you in Hyderabad? Yes, I am in Hyderabad. Okay, so let's say कि इस वक्त Hyderabad में, because what I can see is 35, which is way more than 33. How do you feel out? Like अगर आप इस वक्त बाहर जाएं walk के लिए, how would you feel? How would you feel, like from thermal perspective? Who was responding to the question? Okay, moral of the story is कि हम यहाँ पे जो temperature panic situation create करता है, that's quite normal for Pakistani or Asian perspective. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं एंड लाइक इवन लाइक हम जो स्पेशली जो घरों के अंदर फील करते हैं दैट्स वे मोर डिफरेंट क्योंकि आयरलैंड की जो बिल्डिंग्स हैं दे आर नॉट डिजाइंड टू टॉलरेट द टेम्परेचर ऑफ 33 क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ पे कभी भी 33 था ही नहीं. तो यहाँ के जो घर हैं दे डिजाइन टू टॉलरेट अप टू -5 और -6 जब तक यहाँ सॉरी नॉट -5 -6 +5 और +6 सेल्सियस जब तक यहाँ पे घरों के बाहर जो टेम्परेचर है आउटसाइड टेम्परेचर इज +5 और +6 we feel comfortable inside. But if it drops anything below that, which is also quite different because Ireland में पहले snow या ice नहीं होती थी, now it's icing or snowing in Ireland, which is again climate change. So anything below 5 degrees Celsius, we feel really cold even inside the house. अगर हम heating ना चलाएं तो. And even if we have the heating, it's just like we have to spend more on it. Okay. And well, compared to that, the highest, any guesses what would be the highest temperature recorded in Pakistan? It is just on the 52, screen. 52, I guess. Yeah, so it's 53.7 in Turbat. So जब मैं यहाँ क्योंकि जब
आयरिश किसी बंदे को मैं ये बताती हूँ कि जिसको इतना ग्लोबल अगर पर्सपेक्टिव नहीं है, या फिर जिन लोगों ने इतना ट्रैवल नहीं किया है, व्हेन आई टेल देम कि दिस इज आवर हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लाइक 42 43 इज द नॉर्मल, में हम क्लासेस में जाते हैं, एग्जाम्स देते हैं, एंड लाइक वी जस्ट सर्वाइव दैट, यू नो, लाइक दिस शॉक, बिकॉज इट्स perspective जहाँ पे हम रहते, and then like the perspective also changes with time. For example, I've been living in Ireland for 3 years. मेरा जो thermal perspective है, that differs. If I visit to Pakistan in December, it's not really cold for me at all, especially in Hyderabad. It's just okay for me. And when I think of visiting Pakistan in summer, it just becomes intolerable for me. क्योंकि यहाँ का summer, it's 33 is the highest, so just imagine a person going from this place to that. Okay, so yeah, we will discuss more. Actually, you guys will discuss more कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे factors हैं that makes it more bearable and for the 33 in the uh, in Asia. So हमने शुरू में बात की कि बिल्डिंग का जो मकसद क्या होता है. One of you replied to accommodate people, but we agreed on to accommodate people and meeting the thermal comfort. अगर हम thermal comfort नहीं है, अगर एक बिल्डिंग के अंदर 100 लोग हैं लेकिन they are thermally uncomfortable, so बिल्डिंग की goals achieve नहीं हो रहे. But in terms of goals, Asian goals are different. We need, बाहर बहुत गर्मी है, and we need to cool down the air and we need to cool down the building. लेकिन in Ireland it's opposite. So our goals are different, and we have already discussed on that. Next is the game thing. So you guys will be divided into 4 groups, and each group will be given a specific location. You will have all the details, and then you have to design a building with respect to the atmosphere. And yeah, so one of them is Ireland, one is Asia, and one is Central Asia, and one is South Asia. और चारों जगहों का जो temperature or humidity conditions हैं, they are different. In the game itself, we have given you a very basic like understanding of what the temperatures are, but you will do more of the work yourself and like in discussion. So I will not be in the groups. I'll try not to be in the group so that आप लोग please easily आपस में discuss कर सकें. And I will just be looking after अगर आपके कोई issues हैं, if you cannot access the link or so. So please join the link in the chat. And I want to see all 17 of you in the link. And जो जीतेगा, there is the winning prize for winning award for that. If you can't access the link, please let me know in the chat here. Benjamin, is that clear, or should I give more instructions to that? Ma'am, is it the link that has all the information? What do you mean by yeah? It's I mean, can you see my screen? Yeah, can you see the 4 build a modern house, and there are 4 different climates? I will repeat. So there is a link in the chat. Please उस link को join करें. It will be an online document. So you will be divided into 4 groups. Your group will be like room 1, room 2, room 3, or room 4. That depends how we will be breaking you out in the rooms. And I'll give you brief on what is the task, and जो जिस group की presentation सबसे best होगी, it will be like a 2 minutes presentation, very brief, very short. They will be given an winning award. About the presentation, अगर आप for example 4 लोग हैं, 4 लोगों में से आप लोग decide करेंगे कि who will present. This is the first thing. When you are joined in a group, you have to do that. It's up to you. It's not senior, junior, not, but like
कोई भी present कर सकता है. The presentation time is maximum 2 minutes, and it can be short, but it's gonna be winning. Please don't go to the room slides now because you should only be like making changes when you are assigned a room. So the task is, for example, so the task is to design a passive house to fulfill the given requirements. Given requirements ये हैं, आपको building material सोचने हैं, ventilation और insulation का सोचना है, and then you have to use energy efficient features as well. And the guiding questions for groups are, this is like what should be the building material, what किस किस्म का renewable features हम लगा सकते हैं, किस किस्म की energy features हम लगा सकते हैं. And after the breakout session, each group will do a presentation. As groups present, the other students can also ask questions and they can also give suggestions. So for example, this is the Ireland for room 1. For example, room 1 में Miss Majabeen है और Anila है, Sahil है, Akshay है. For example, there are the 4 people in the group and they are given this task to design a building जो कि इस atmosphere के लिए हो. और इसमें हमारे जो नीड्स हैं, हमारे जो क्लाइंट की नीड्स हैं, the house should be comfortable, it should be okay from the health perspective, क्योंकि from health perspective मैंने अभी तक अपना बताया कि moisture is a problem here, so I need to control that, and then the house should be energy efficient. So this is just the description of your task, and then you go to the room 1. So यहाँ पे आप अपनी notes डालेंगे कि किस किस्म का building material होगा, किस किस्म के ventilation होंगे, किस किस्म के energy efficiency features होंगे. If you want to be more creative, you can maybe draw something, design something, but this is one slide जिसमें आप अपना सारा काम करेंगे. अगर किसी को कोई questions हैं तो please मुझसे अभी पूछ सकते हैं. Any questions? Oh, please अभी ना इसमें कुछ fill in करें. That would be depending on the on your rooms. Okay, so please join your room now. Great, I can see 2 or 3 people have joined their rooms. So go to your room and work on your sheets as per the room you have given. Thank you. गैसेस जो कि क्या करता है, जो हीट होती है उसको अंदर आने से अंदर ही रखता है और जो बाहर कोल्ड होते हैं उनको बाहर रहने देता है. तो दीज आर आवर बिल्डिंग मटेरियल्स जो कि हमें बहुत अच्छे से लगे, जो कि आयरलैंड के लिए बहुत सही से काम करते हैं. नेक्स्ट वी हैव वेंटिलेशन एंड इंसुलेशन. इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम विंडोज एंड वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं. जैसे वही बात के ट्रिपल ग्लेज्ड, तो उससे भी क्या होगा, हमारे पास जो चीज़ होंगी वो बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएंगी और जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी. इसमें मेन चीज़ है वो है मिनरल वुड्स. मिनरल वुड्स जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, वो क्या करते हैं, हमें हीट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कम करते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन रखते हैं. Next, in the last we have energy efficiency, and in this I go for mainly underfloor heating. Underfloor heating means कि आप क्या करो, जो फ्लोर है उसको ऐसा आप सेट करो कि उसमें Your underfloor है वो time's सही हो. up. Yeah, thank you so much, Minahel, for someone to be speaking up, and I'm so glad. It's just with that, we have to stick with the time. Thank you so much. Room 2. Mohammed Umar, Adil Baloch, Anila, Ikra, and yeah, Anila and Ikra. I'll just start the timer because somebody has to, should be already coming up. Room 2, Mohammed Umar, Adil, Anila, and Ikra. You have done the hard work. Please, somebody come and present the work. क्योंकि एक बार
पर टाइम खत्म हो गया तो you wouldn't be given the opportunity again. So, Assalamualaikum. alaikum. Then we can use material in hot and humid climate in South Asia that we use bamboo, जो कि easily available होता है हमें और cost effective भी होता है, like clay bricks and concrete, palm trees, like natural stone, timber, and ventilated concrete blocks, hollow blocks. अब हम आते हैं कि हम वेंटिलेशन और इंसुलेशन में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या यूज़ कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो उसके लिए हमने ये डिज़ाइन मतलब किया है कि क्रॉस वेंटिलेशन हो उसकी और वेंटिलेटेड रूफ डिज़ाइन हो, इंसुलेशन मटेरियल्स फॉर रूफ्स एंड वॉल्स हो, लाइक वेंटिलेटेड वॉल्स, कैविटी वॉल्स जो कि हमें सन से भी प्रोटेक्ट कर सकती है, शेडिंग ओरिएंटेशन, हाई सीलिंग और ओपन फ्लोर प्लान्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें इसमें आती है और एनर्जी एफिशिएंसी में इसमें एनर्जी एफिशिएंसी में ये क्या है कि ये डिसाइड कि हम पैसिव कूलिंग डिज़ाइन हो जबकि क्रॉस वेंटिलेशन हो और ओपन फ्लोर प्लान हो जिसमें मिनिमाइज इंटरनल वॉल्स जो है वो एयर को सर्कुलेट करे फ्रीली और शेडिंग एलिमेंट्स में हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डीप ओवरहैंग्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लोअर्स, ग्रीन वॉल्स, वर्टिकल गार्डन्स। Thank you so much. Room 3. Sorry, we are short on time. हाय मैम। ओके सो Yep. हमारा ये पूरा यहाँ पे शेयर नहीं हो सका पीपीटी पे, लेकिन मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा। Okay. ठीक है, टाइम स्टार्ट हो गया। Yes. तो सेंट्रल एशिया में जो कोल्ड वेदर होती है तो हमें वहाँ पे एनर्जी प्रिजर्व करनी पड़ती है। तो उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल्स जो यूज़ होते थे ट्रेडिशनली, वो यूज़ करते थे क्ले और मड की ब्रिक्स, बिकॉज वो इंसुलेटिंग बॉडी के तौर पे काम आती थी। और वो वुड भी यूज़ करते थे, स्पेसिफिकली एप्रिकॉट और वॉलनट का वुड, बिकॉज उसमें वो भी बिकॉज वुड इज़ इंसुलेटिंग एलिमेंट। और उसके अलावा अब उसके बाद जो मॉडर्न मटेरियल्स हैं उनमें आजकल इंसुलेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स यूज़ होते हैं और डबल ग्लेज विंडोज यूज़ होती हैं। अब डबल ग्लेज विंडो वो ही होती हैं जिनमें दो ग्लासेस लगे होते हैं और बीच में एयर फ्लो होता है। और एयर जो है वो सबसे बड़ी इंसुलेटर है अपने इन्वायरमेंट में। उसके बाद हम आ जाते हैं वेंटिलेशन इंसुलेशन में। वेंटिलेशन और इंसुलेशन में लार्ज विंडोज़ वहाँ पे होनी चाहिए, साउथ फेसिंग विंडोज़ होनी चाहिए, बिकॉज विंटर में हीट हम गेन कर सकते हैं वहाँ से। और उसके अलावा वॉल इंसुलेशन होनी चाहिए। और एनर्जी क्या था, एनर्जी एफिशिएंसी फीचर्स में इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि एलईडी लाइट्स हमें यूज़ करनी चाहिए, सोलर पावर एनर्जी हमें यूज़ करनी चाहिए। और इसके अलावा वॉल्स, रूफ और फ्लोर पे हमें इंसुलेशन यूज़ करनी चाहिए। और उसके अलावा शेडिंग हम यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ पे। और बस नेचुरल वेंटिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम एनर्जी कुछ अपनी सेव कर सकते हैं। दैट्स इट। Okay. Perfect. Room 4. However, आपने 2 मिनट लगा दिए थे to decide, लेकिन I'm still giving you just the opportunity again. I'll count till 10. 1, 2, 3, Sania, I 4, think 5, Sania, Ramsha, Rubab, 6, and Alishba. 7. Yeah, Rubab, Sania, Ramsha, Alishba. Yes, 8, ma'am. Alishba, please 9, start and describe it. Yes, ma'am. मैम हम साउथ एशिया में हॉट एंड एरिड क्लाइमेट होता है मोस्टली, तो बिल्डिंग क्लाइमेट में आवाज़ आ रही है? Yep. जी आ रही है आप। यस, सो मैम हम बिल्डिंग मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं वो मड ब्रिक्स होते हैं, बैम्बू, लाइम प्लास्टर, क्ले टाइल्स, टेराकोटा एंड जाली स्क्रीन। स्टोन में हम सैंडस्टोन और लाइमस्टोन यूज़ करते हैं। और वेंटिलेशन एंड इंसुलेशन में हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें वेंटिलेशन के लिए, नेचुरल वेंटिलेशन के लिए हम जाली स्क्रीन्स यूज़ करते हैं और वेंट कैचर्स यूज़ करते हैं। और हम कोर्टयार्ड्स दे देते हैं ताकि हमारे
क्लाइमेट जो है वो थोड़ा ठंडा रहे। एनर्जी एफिशिएंट फीचर्स में ओपनिंग्स एंड शेडिंग्स वगैरह दे देते हैं और वेजिटेशन वगैरह, और लो एनर्जी एचवीएसी टेक्नोलॉजीज एंड इंसुलेशन हीट मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हमारा क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा रहे और रहने जैसा हो जाए। Okay, perfect. Any questions so far? We have a little time left for the rest of the presentation. Keeping us active throughout the webinar and giving us the little bit knowledge which we want to convey to our participants. And I think Okay. because of the games and small activities, it was an amazing webinar overall. Oh, okay. We are still continuing with the discussion. So, अभी तक students ने अपना input दिया कि how things can be, and like I'm sure जब आपने exercise की होगी, you would have googled a bit, which is good कि आप लोगों ने ये try किया, and like we all heard different groups के um, how materials are even different, how because हमारी जब building की requirements different है, so we are using different kind of windows. And oh yeah, so like जिन लोगों को लग रहा है कि webinar खत्म हो गया, तो discussion is not ended. This was one half of the presentation before the activity. We did the activity and now it's the latter half. The reason कि मैंने activity को बीच में रखा, because now you all are experts. आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी effort की, थोड़ी थोड़ी कोशिश की to understand कि किस तरीके से चीजें आर्किटेक्चरली डिफरेंट होती हैं, बिकॉज मोस्टली जब हम पाकिस्तान में या फिर अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, तो मैं सिर्फ आयरिश परस्पेक्टिव में सोचती हूँ कि हाउ डू आई नीड टू वर्क ऑन बिल्डिंग्स हियर, बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर करियर इन फ्यूचर कि आप ग्लोबली उसके बारे में अंडरस्टैंड करें. सो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर डिस्कशन. आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट क्योंकि आप लोग ऑलरेडी you're experts on it, and then we'll finish hopefully by 7:35 or 7:40. So continuing, Irish architecture जो है is very interesting and like super uncomfortable for people belonging from Asian perspective. क्योंकि यहाँ पे जो घर होते हैं they are designed very small. मैंने रेस्टोरेंट की पिक्चर यहाँ पे बॉटम राइट पे इसलिए लगाई है क्योंकि जब हम यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बिलीव मी, सारे जो टेबल्स होते हैं आपस में they're so like tightly packed because even their space is very small. हमारे जो घर होते हैं यहाँ पे वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, एंड दैट इज बिकॉज जितना बड़ा बड़ा घर होगा उतना बड़ा घर का वॉल्यूम होगा. ठीक है, यानी वॉल्यूम मीन्स जो इनसाइड स्पेस है, और जब हमें हीट करना होता है तो उस ज्यादा वॉल्यूम को हमें हीट करना पड़ेगा. ठीक है, एंड हीटिंग इज लाइक एसेंशियल बेसिक रिक्वायरमेंट हियर. In Pakistan, air conditioning is now becoming maybe a basic requirement with the heat waves and all, but it is still considered a luxury. But in cold places, heating is not really a luxury. It is the luxury of how much time of the year आप दिन में या फिर साल में कितने घंटे heating चलाते हैं. That is considered luxury. लेकिन heating होना, it's the basic requirement. You cannot survive in Ireland without heating. तो जितना बड़ा आपका space होगा उतनी बड़ी space को आपको heat करना पड़ेगा. So that doesn't make sense. So architecturally हमारे कमरे, हमारे रूम्स और बहुत छोटे होते हैं, और इवन हर घर के हर जो इवन हमारा जो किचन है, लिविंग हॉल है, देयर शुड बी डोर्स. इट्स कंपलसरी सो दैट वो स्पेस क्लोज हो जाए और हमें उसे हीट करने में आसान. From culture's perspective, stone is very commonly and historically used in Ireland because Ireland, अब से कुछ time पहले they couldn't afford much of the like building materials, and stone was like fairly available and very easy. So अब अगर आयरलैंड को चीजें अपडेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू हीट, मोर हीट हमने शुरू में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात की, अगर आयरलैंड क्विकली शिफ्ट करेगा तो इट वुड इम्पैक्ट ऑन देयर हिस्टोरिक लाइक कल्चरल आइडेंटिटी. सो दैट्स नॉट गुड. जो स्लो इंटीग्रेशन होती है इनोवेशन और कल्चरल एलिमेंट्स की, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो आयरलैंड को स्लोली चीजें चेंज करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू देयर आइडेंटिटी. Now, when we talk about Asian perspective, it's completely opposite.
एशिया में हम अपने कोर्ट यार्ड्स, हम अपने एरियाज, हमारे घर में हम हर जगह पे we leave some open areas ताकि हमारी एयर सर्कुलेशन बेहतर हो सके। आप लोग मुझसे बहुत बेहतर तरीके से इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि why do we have bigger spaces in Asia? So the point is it's just like not just culturally but it's they are serving a purpose जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि हमारे बिल्डिंग का एक पर्पस होता है that is to keep the occupants much more comfortable. So they are little अब अगर हम आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमेशा लगता है कि मतलब like आप लोग तो सब मोस्टली आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं लेकिन anybody outside of you would think कि they are just for the beauty perspective, लेकिन नहीं, आर्किटेक्चर की जो काफी perspectives होते हैं they are serving a purpose in one form or other. Similarly हमारी जो religious places हैं, अब इस बिल्डिंग में इस तस्वीर में हम बहुत कुछ देख रहे हैं, there are open spaces, there are open sheltered spaces, उसके पीछे हम जाली देख रहे हैं जैसे कि ग्रुप 3 ने बताया, ग्रुप 4 ने भी बताया कि हम एशिया में जालीज यूज करते हैं so that we get the bit of a light, we get a bit of circulation of air, and that helps with keeping the building cool. So this is just more. So हमने शुरू में एक मैंने सवाल पूछा था, so what makes 33 bearable in Asia and it's not bearable in Ireland? It's our buildings. Inside of the buildings, we have these jalis, there's these bits and pieces जो कि हमारी cultural identity भी हैं, and then plus they help us with the ventilation and air circulation as well. So this is a typical like Arab architectural example. It's called wind catcher. हमारे ग्रुप्स में से भी एक ग्रुप ने इसके बारे में बात की कि this wind catcher helps. It can lower the temperature by 17 to like by 70 degree to like up to 70%, depending on the weather. So that's a huge. अगर इसको आप through air conditioning करने की कोशिश करें, so that's a lot. And if you have just this little bit of architectural change, it comes free. And 70% like it's saving your energy, cooling energy by like 70%. Yeah, so moving on. आर्किटेक्चर में हम बहुत सारी चीजें जो है मिमिक बायोमिमिक्री यानी कि हम नेचर से इंस्पायर होकर करते हैं. I have a couple of more examples as well, but this is like termites more amount जो के little जो है insects अपनी किस तरीके से एयर सर्कुलेशन से के लिए उन्होंने बनाया होता है, we took inspiration from that, और उससे हमने जो है we built the wind catchers. Yeah, these are just a couple of more examples of biomimicry. Biomimicry is not only used in architecture, it's used in many other forms. कि हम देखते हैं कि nature किस तरीके से perform कर रही है, like some of the shapes and some of the functions, and then we take examples from those and then we put in our practices. किसी को कोई सवाल हो तो they can unmute and ask me. So this is a picture from Singapore. The Singapore super trees are at the gardens by the bay. It is also inspired from nature. So they are trees, but there's like solar panels on the top of it. So this is like an artificial thing, but inspired from the nature. We also have great architects and great people who are working great stuff with sustainability. शुरू में हमारे ग्रुप 1 ने low carbon building material की बात की. So that is also important for you guys कि अगर आप of course in future आप लोगों ने क्योंकि जो it's important from your career perspective these little bits and pieces क्योंकि अगर आप जब globally इस वक्त अगर आप अपना practice move करना चाहेंगे तो it's not just building a house or it's not just about accommodating people, it's about accommodating people comfortably and how by using minimum like carbon footprint. So some other features जिनसे हम एशिया में buildings को cool down करते हैं, that is using water bodies. हमने देखा होगा कि like we have little ponds and like our water circulation around that keeps our homes bit more cooler. I don't recall anything from Pakistan, but that's very common in South Asia, in Thailand and Malaysia. They have something of water. And even if you travel around in Europe in harsh summers or even like Makkah,
They for example, they use water for spraying, so that's just cool down the occupants indoor and outdoor. And this raising the floor is a very cool technique to make the building bit like 1 degree or 2 bit cooler, but that it impacts a lot. उससे हमारी जो energy consumption है वो बहुत कम हो जाती है. So एशियन आर्किटेक्चर, क्योंकि इसमें एशियन आर्किटेक्चर के अंदर इतनी ज्यादा फीचर्स हैं to cool down the like buildings and reduce it, like have reduce the impact of temperature. It can still withstand a couple of more degrees. Like अगर पाकिस्तान में, if your building is designed enough, good designed enough. मैं कच्चे घरों की बात नहीं कर रही. I'm talking about buildings जिनमें actually they have put effort before building designing a building. So अगर एक building properly designed है, the Irish architecture, sorry, not Irish, the Pakistani architecture, Asian architecture, अगर थोड़ा और भी climate change होता है तो inside the building it's okay. But अगर Ireland में थोड़ी, like if it goes like a half a degree more, so we are not able to sustain those in these buildings. क्योंकि यहाँ की buildings, हाँ यहाँ पे अगर थोड़ी और सर्दी होती है तो it's a bit different, but not really in case of in case of the heating. The picture you are seeing on the screen now, it is a passive house, and like in the group exercise, what we were trying to do was also a passive house. So we did the activity without actually maybe understanding the concept of passive house, which is very complex. Can anybody from the participants let me know what a passive house is? So in terms of buildings, so there are buildings which consume energy for heating or cooling, but then there are net zero buildings or nearly zero buildings. जिनसे मतलब ये होता है कि नेट जीरो और नियरली जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स का मतलब होता है कि उस बिल्डिंग को हीट डाउन या कूल डाउन करने के लिए वेरी मिनिमम और नियर और नेट जीरो एनर्जी चाहिए होती है. नियर और नेट जीरो से मतलब है अगर वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है तो एनर्जी कंजम्पशन इज renewable, or there is no energy requirement for heating or cooling down the building. And now if you think from Pakistan's perspective, it's not technically possible, like from our basic understanding, but passive house एक ऐसा concept है जिससे ये possible है कि हम घर को इस तरीके से डिजाइन करें कि हमें जो है एनर्जी यूज करने की जरूरत ना पड़े. And now building such a house is a bit more expensive as compared to a normal house. लेकिन उस घर में हम कुछ और नहीं करना होता, सिर्फ हमें हीट बैलेंस करनी होती है. जैसे शुरू में मैंने बात की ना कि जितने लोग हम कमरे में होंगे इट मेक्स इट मोर वार्म. तो सिमिलरली हम पैसिव हाउस डिजाइन करते वक्त वी लुक एट कि घर की इंटरनल हीट गेन्स क्या हैं या फिर लाइक हीट लॉसेस क्या हैं. ठीक है, हीट गेन से मतलब इफ वी आर कुकिंग दैट्स अ हीट गेन. If we are drying a clothes or inside the home, which is very stupid if you're listening it from Pakistan, लेकिन हाँ आयरलैंड के अंदर हम घरों के अंदर कपड़े सुखाते हैं. So that's a heat loss, लेकिन it's moisture gain. So आप अगर उन सारे like all the factors that you look at in this picture, solar water heater collector, summer winter, हमें windows, एक ग्रुप ने बात की कि हमें windows किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए, that impacts on your energy consumption. So अगर हम इन सारे factors को माइंड में रखते हुए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्डिंग्स बनाते हैं, so that makes a passive house, and passive house is almost zero energy consumption. So this was a more question. What could be the more perspectives जिससे जो है हम और जो है आयरलैंड की टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते. Okay, so we have this we are almost on time and we have this quiz which I mean to say we have this poll. Please respond to this poll, your 21 participants. We are not going to end this meeting until all 21 participants vote. Benjamin, can you see the poll on the screen? Yes, I can. Yeah. So please
respond to all the questions in this poll. That is important for your certificate. At the end, there's a question, please put your full name and your full email ID. So we will use these, your name and the email ID for the certificate, and you'll also get your results in the email with your certificate. So जो लोग अगर किसी को certificate नहीं चाहिए तो they can leave the meeting. If you need the certificate, please respond to this poll, and we will be here until 7:40. 7:40 पे मैं meeting close कर दूंगी. So if you don't do it by 7:40, you will lose your opportunity to get the certificate. Benjamin, can you try to respond to one of the polls? I Because just I think, okay, it's working. Yeah. Was it you who responded? yes, Okay. I was Okay. trying. Yeah, so it's working. Please respond to the poll, which you can see on your screen. And meanwhile, अगर किसी को कोई questions है, तो we are here until 7:40.